Good morning, students. Today we will start new chapter, light, shadows and reflections. In this video we will learn about luminous and non-luminous object. So let us start. Students, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे कि रोड पर हम लोग बस को देखते हैं, कार को देखते हैं और रोड के किनारे लगे हुए पेड़ों को देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या रात के टाइम जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, क्या तब भी हम इन चीजों को देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते हैं ना। बट स्टूडेंट्स, रात के टाइम अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं या अगर रोड के किनारे लगी लाइट्स ऑन करते हैं, तब हम इन चीजों को देख पाते हैं। इसका मतलब बिना लाइट के हम चीजों को नहीं देख पाते हैं और लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड दैट विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन एंड लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स. Now let us understand about luminous object and non-luminous objects. Students, those objects which emit light by itself are called luminous objects. For example, sun, tube light and stars are called luminous object. Students, ये objects जैसे कि sun, tube light और stars खुद इनमें से लाइट निकलती है, इसलिए इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट नहीं एमिट करते, उनको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीस ऑफ क्लॉथ, फ्लावर, मून डू नॉट एमिट लाइट बाय इटसेल्फ, सो दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बट स्टूडेंट, यहाँ पर हम मून के बारे में फिर से सोचते हैं। जब हम मून को नाइट में देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि मून से लाइट निकल रही है। लेकिन स्टूडेंट, मून खुद से लाइट को एमिट नहीं करता है। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। मून केवल सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। Students, luminous objects, for example, sun, tube light, are visible because they emit light on their own. Now let us understand how non-luminous objects are seen. Let us first discuss how this boy in the picture is able to see the flower. We know that flower is non-luminous. Students, in this picture, when light from sun falls on flower, then this light is reflected by the flower and reaches to eyes of the boy, and the boy is able to see the flower. So we can say that flower is visible because of sun. So we can say that non-luminous object flower is visible because of luminous object sun. Students, non-luminous objects reflect the light falling on them, and the reflected light are sensed by the eye, and thus we are able to see non-luminous objects. Let us revise what we have learned today by solving some questions. Question number 1. Which among the following is luminous object? Option A, sun. Option B, tube light. Option C, star. Option D, all of these. And the correct answer is option D, all of these. Question number 2. Which among the following is non-luminous? Option A, sun. Option B, star. Option C, tube light. Option D, moon. And the correct answer is option D, moon. Question number 3. Luminous objects are visible because option A, they emit light on their own. Option B, they reflect the light falling on them. Option C, cannot say.
Option D, none of these. And the correct answer is option A, they emit the light on their own. Question number 4. Non-luminous objects are visible because option A, they emit light on their own. Option B, they reflect the light falling on them. Option C, cannot say. Option D, none of these. And the correct answer is option B, they reflect the light falling on them. Practice makes perfect. Students, these are some homework questions that you need to solve at your home. I hope that you will answer these questions correctly. Thank you.